Hi, my name is 𝓮-𝓮𝓷𝓽𝓸𝓻𝓼 and I am presently working as ASO in Agriculture Ministry, Central Secretariat Service. And in the present job, I have been working since May 2018, technically. But if you ask after the training, I would say it's around mid of July 2018. So around 2 years, yes. Next is post got through SSC CGL exam. So in 2015 exam, I got auditor in CAG, Comptroller and Auditor General of India. And in 2016 exam, I got ASO in CSS. And in 2017, I've got Excise Inspector. I've yet to join and also yet to decide whether to join it or not. So now, coming to pros and cons. So I'm going to go through the details of auditor job profile because rest of the job profiles you'll be getting from other people. So about auditor in CAG, it's a 2800 grade per job, and it's an all India posting job first of all. And if we talk about pros of that job, it's the first thing is that you'll be getting your posting in state capitals only. Wherever, whatever the state you get, you will be getting your posting in the capital of that particular state only, because the headquarter of accountant general offices, comptroller and auditor general offices, is mostly completely in state capitals. Next is it all depends on what job profile you get, because you can either get the headquarter posting where you will be working in administration or like GA sections and everything, or you may get posting for the audits where you get to be in audit teams including senior AOs, double AOs, and senior auditors, and you'll be going out quite frequently and auditing the organizations, state organizations or central government organizations. And or you may get a job profile where you have to check the accounts of the organizations and you have to sit back in the headquarters only. So it all depends upon what kind of profile you get as an auditor. And posting is likely to change after a certain period of time, usually internal transfers within the divisions, you can say. It's quite frequent as far as I have observed and experienced. And when we talk about timing, it's mostly the standard hours of work. And in the audit, when you are visiting an organization and auditing them, it's usually less than the working hours, standard working hours. So the hours are comfortable. You go around 10, 11, and you are, you come back around 4:35. So it's quite comfortable. And if you talk about joining time, as far as I remember, the result of CGL 15 was on June 2016, 29th June 2016. So it was at the end of June month of 2016, and I got my joining on 22nd December 2016. So it was less than 6 months. And pros is one major benefit you can say is that when you go for an audit, you get TADA, but you get to save some of that because of internal arrangements by that organization. So that's a plus. If you are in an audit team, you get to meet people from certain organizations, and you get an extra TADA which gets saved. Now if it's a desk job or a field job, I've already covered, and public dealing is there, yes. The cons is if you are in an audit team, you will be eating a lot of outside food, and being in an audit team is only beneficial till you are a bachelor. It is considered after you've got married and you have a family to run. It doesn't seem so comfortable. After promotions, when you become a double AO, if it's a civil, if you are
I'm not sure. If you have a two job profiles of double O, it's one is civil and second is commercial. And if you are a double O in civils, you keep working in that state only. But if you are a double O in commercial profile, it's a all India posting. And the difference between civil and commercial, major difference is that mostly in civil audit, you cover whole of the state basically. So in civil audit, you have to go to certain areas which are not connected very well from cities, and low profile areas type. And in commercial audit, basically most of the headquarters of the organizations are in that state capital only, or if it's not in the state capital, it will be in major cities of that state. So how would you rate your job profile on the scale of 10? The audit job, I guess the definition of, the rate I would give out of 10 would change according to the basis. So, given that all job profiles in the in the SSC, obviously it's a low grade job. Also, you can, when in a group of vacancies where you can also get 4800 grade pay, double A. So I guess I would scale it 6 or even 5.5 maybe. But if you talk about the work environment and comfort of doing a job, then yes, I guess it's an 8. I guess yes, I would give it a 8. Book and test series you followed. First of all, I didn't prepare for the SSC from a very well recognized institution. That what books and test series you followed? For maths, I guess I followed Kiran previous year questions, 5500, I guess 4500 or 5500. Get the latest book. Next is English. I followed Arihant's book, Arihant comprehensive book for English, I guess. Yes. And for reasoning actually, I didn't prepare very well because I had studied myself for the reasoning for banking, and banking reasoning is way more superior to what comes in SSC exam. So I didn't have to prepare much for reasoning, and also my coaching center didn't make us. They didn't teach us very much the reasoning subject. Also the GK part, they didn't teach us very much, and also I wasn't very good in that cramming thing, so I didn't prepare for it either. Prepare much for it either. I just read 2 or 3 topics out of GK and read a few questions from Lucent, I guess, and no test series I followed. No test series. After how much time SSC CGL final result declaration, the candidate is contacted by the department? Within 2 months, within 1.5 months, I got my letter from audit department. Audit department is uh, very fast in giving joinings. They don't take much time. Next is how the department contact the candidate, through email, through post, is the correspondent address. Well, I don't exactly remember, but I remember contacting, communicating them on email also, and on the website also. They update their preference form on the website. So yeah, first it's their website, and when you got the zone or state, after that the state will send a letter also, and also via email they'll send they'll communicate with you. And obviously it's going to be correspondence address, but it's there's leniency. You can request them to dispatch letter on a permanent address also, that you can ask them and they can do that, I guess. What documents need to be filled, and what forms and documents need to be submitted or shown? All your education qualifications and Aadhaar card plus one another ID, and every other ID basically you have, they'll ask you to submit, but that's on your part to submit all of them or not. And if there's a discrepancy in your name in different documents, or of your father's name or of your mother's name, whatever the case may be, it's better that you have a affidavit explaining that both of those names are of yours or your father's or your mother's, whatever the case may be. And documents what needs to be filled, details of the family for CGHS purposes, and
a joining report basically you have to give also, and other forms are include NPS form and your CGGIS nomination, your gratuity nomination form, and a form for oath of working fairly, and among other things. And then please throw some light in the medical process, how it is done. So before getting an appointment letter, you will have to be medically tested. And I went there in AG office Bhubaneswar, and before making us join, they handed us a letter which we had to produce to the uh, in the hospital so that they can start our process of medical. So it took a day for getting all the tests done, and some of them got the report in the same day, so they joined on 21st December, and a few of them who couldn't get their reports on the same day got their reports on next day, 22nd December. So I was the one getting on the next day. I joined on 22nd December. So it takes a day or two basically. So there are 6 to 7 tests, which includes your color blindness test, your hearing test, and blood test, which automatically have 3 or 4 reports including it, and you have ultrasound, ECG, I guess. So these are the tests, I guess, not more. And how it is done? Is anyone rejected on medical grounds? How is it done? Same way normally tests are done. A blood test, they take a blood sample. For the eyes test, your color blindness test, basically they hand over to you a book which has certain color based tests. You have to look into it, and tell them what that represents. Usually there are some numbers and alphabets color coded. So if you are color blind, you can't see them, and if you are not, you can clearly see them. And for hearing, I don't actually remember much about hearing test. And for ultrasound, just like the ultrasound is done, they ultrasound जैसे होता है यार, basically तुम्हारे पेट के ऊपर वही जो भी क्रीम व्रीम होती है वो लगा के, और they use that machine to scan through your stomach. And next is, please throw some light in the police verification process. Police verification process is their internal matter. Basically, they'll send a letter to the local police for every address you have mentioned in the attestation form, whether it's a correspondence address, whether it's a permanent address, and all the addresses where you have mentioned in the column where you had to mention all the places you have lived in the past 5 years. Particularly mentioning all those addresses where you have lived more than 1 year. So police verification उन सभी addresses पे जाती है, और basically you have to have a proof of living there. If it's a rental property, then a rent agreement. If that's not the case, do not mention that address. And do they ask for job location preference? And how does the category preference determine? No, they don't ask for a job location preference because mostly people are posted in the headquarters only. So no, time taken to get into the training phase. Yeah, there's a training phase. For first is you have to pass a language test, and you get the training for the language of that particular state, local language. And usually it's some school in that area where you get your training for the language done. And for that particular part of your job, I guess for 3 months, that is 60 days for that training is there. And for that period, you have to attend office for first half of the day, and for the second half of the day you get to have your training. Another training is there that also is on the job training. So basically you are not posted in some training center particularly. आधा दिन office, आधा दिन training, जैसा भी केस है. और बाकी हिंदी की ट्रेनिंग बीच बीच में एक दो दिन चलती रहेगी. Important points, I guess I have covered basically pretty much everything. Yeah, for the training part, what is the duration for the training? I guess around 2 months for the language also, and for the other training, the on the job training you have. And location basically is around the office premises only. But because we had our government quarters for the office in around 2 kilometers, at 2 kilometers distance of our office. So there was a recreation club hall where they could arrange the training.
So our training was there. Otherwise, it will be in the office premises. And for the state regional language training, you have to go to a school basically in that particular city. Learning modules, all the rules related to administration. So it'll mostly cover the office procedures and LTC leaves, pay fixation, everything. And apart from that, they'll teach you basic audit related terminology, and also the how the procedure is done, the types of audit, financial audit and supplementary audit, everything. They'll teach you different parts of audit, and how the paras are made into a audit report, everything, how from starting to scratch to end, everything. Next is exam. Yes, there is an exam. You have to pass it. Accommodation and food. Accommodation, as it is on the job training, no accommodation is there. But food, I guess there is refreshment. No proper lunch, I guess. But just uh, refreshment is there. And charges. The refreshment is without charge. Salary allowances during training. Complete salary. Yes, they provide HRA. Posting and transfers. Time taken to get posted after training phase, as it is first joining the department and after that the training is done, then no question of time taken to get posted after training arise. And is it all India? Yes, yes, it is a all India posting. You can get any of the state, depends upon your marks basically and your preferences. Third is chances of posting in home state. Yeah, depends upon the vacancies. Second upon your marks, third upon your preference. Fourth is transfer after how many years as per eligibility, and in reality how many years it will take for transfer. As the question doesn't arise for the transfers basically for auditor job, क्योंकि headquarters में ही posted रहना है और बाकी state में नहीं जाना है, so not applicable. After transfer, do we lose seniority? No. Actually, interstate transfer is there, but not unilateral transfers are there. There are mutual transfers, but the person should be of same category, working in other state where you want to go, and he should be willing to come to your state also. So it is really hard to find when you get some states in south or northeast, because mostly people are from north, and who are posted in a state within north won't be willing to get transferred in that particular state you are working in. Deputation criteria and chances. Yes, there are. And basically deputation के लिए तो जो भी deputation के rules हैं, you can also get deputed in other departments also, depends upon vacancy. Seventh is what about salary seniority after deputation? यार वो deputation allowances वगैरह जो भी मिलते हैं, या तो तुम डेपुटेशन वाला ग्रेड पे ले सकते हो, या फिर डेपुटेशन अलाउंस जो 5% से लेके 15% तक या 10% तक जो भी है, वो अप टू 9,000 की लिमिट रहती है। किसी किसी केस में 40,000 की है। तो वो डेपुटेशन के ओएम्स हैं, बेस 2017-18 के आई गेस, वो 2 ओएम देखने पड़ेंगे। वन पॉइंट आई वांट टू ऐड इन द ट्रेनिंग आल्सो, दैट आउटसाइड स्टेट trainings are also available sometimes, and you have to apply for it through proper channel. Work profile and work culture. Number of working days in a week, 5 if you are posted in headquarters or are in a commercial audit. But if you are in a civil audit, then 6 days, because state organizations are audited in this civil audit. And your holidays also depends upon the calendar of your particular state in that civil audit. Office timings 10 to 10 to 6. Yes. Is biometric necessary? Yes, quite necessary. In Bhubaneswar audit, there was compulsion of biometric 4 times in a day: before coming to office, before lunch, after coming, after leaving office. Is it field job or a desk job? I've already covered. Job description in both the situations I've already covered. Any dress code? Dress code. You just have to be presentable. Otherwise, no dress code. What kind of office culture is there? Good. Is office infrastructure good, average, or bad? It's average, not bad. But as offices are getting renovated these days very much, so yeah, it'll get better only. Usually there is no workload as such, but in some parts of the civil audit, there may be some workload or statutory audit.
Otherwise, in headquarters, I guess there is no such workload. And for the salary and allowances, the same pay structure that every other government job has: basic plus DA plus transport allowance plus DA on transport allowance plus HRA. These are what gets credited to your salary account, minus your NPS, your CGHS contribution, your CGGIS contribution, and income tax deduction, and 4% cess on that income tax deduction. So basic is 29,200, 29,200 for the level 5 for auditor, and DA is currently 17%, HRA is 24% for X and 16 for Y, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3600 एक्ससिटी के लिए, बाकी के लिए 1800 प्लस DA on that, और CGHS is level 5 के लिए I don't remember कि कितना CGHS है, I'll have to see, and CGGIS 30 rupees I believe, and NPS 10% of your basic plus DA. Also, all the tour and travel allowances that you will be getting if you are working outside the city or traveling for your job. So TADA, basically you have to fill the reimbursement form for that. टाइप 2 क्वार्टर्स के लिए एलिजिबल होते हैं ऑडिटर्स, और यूजुअली आफ्टर 1 year or 1.5 year you will get that quarter. Particularly in भुवनेश्वर क्वार्टर्स 2 किलोमीटर दूर थे. दो कॉलोनीज थी बेसिकली, और एक 2 किलोमीटर दूर है, दूसरी 3 किलोमीटर दूर है, तो पास में ही है बेसिकली. Your experience, is there a gap between your imagination of this job while preparing for SSC and after getting this job? No, I went with exactly no expectations at all, or least of them. So no difference between expectation and reality. But yes, in south areas basically, and in areas around coastal areas like Bhubaneswar or Calcutta, maybe you'll be facing problem for the vegetarian food, outside vegetarian food base. So you should keep that in your mind. Related to work culture, that was really comfortable, I guess, as compared to other jobs, other private jobs. I guess that's a comfortable environment for work. Job satisfaction and reasons. Job is a comfortable job, I would say. Comfortable hours for job, and usually respectable job, because audit department is usually something people look up to. And will you go for any other post in next CGL exams? As I've already told you, I've got the better opportunity of joining ASO and CSS. It was a better paying job for me. It was near to my house. I belong from Rajasthan, so I got a job in Delhi, so I had to join that. According to you, what are the top 5 CGL posts? That totally depends upon the basis you keep of grading posts. But like, if you have to ask from the point of view of myself, I would say examiner, yes. Income tax inspector, yes. CSS, yes. MEA, yes. AAO, yes. Government quarters or rented apartments. Audit and the government quarters are basically more or less same. I would say if you have to be in that particular job only, you can have rented flats. It'll be better, way better. After that, can we get time for UPSC preparation while working in this job? Yes, you can, definitely. आशा करता हूँ आपने हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट नंबर 1 संदीप सनेजा जी के ऑडियो इनपुट्स को ध्यानपूर्वक सुना होगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिली होगी. अब हमारे पास सेलेक्टेड कैंडिडेट नंबर 2 है. हमारे पास हमने 2 इनपुट्स लिए हैं ना इस पोस्ट के लिए, ऑडिटर सीजी के लिए हमारे पास, इसलिए हमारे पास सेलेक्टेड कैंडिडेट नंबर 2 जो है उनके इनपुट्स को अब मैं प्रस्तुत करूंगा आपके सामने. हमारे पास कैंडिडेट नंबर 2 है हमारे पास सेलेक्टेड कैंडिडेट राहुल. ठीक है, इनके डेजिग्नेशन क्या है? ऑडिटर इन सीएजी. इनका एक्सपीरियंस रहा 2 years का. ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स इनके हिसाब से देखते हैं यहाँ पे जॉब के क्या रहे. देखिए इनके हिसाब से क्या हुआ हमारे पास, प्रोज जो यहाँ पर रहा वहाँ पर बैलेंस वर्कलोड रहा यहाँ पर प्रोज. ठीक है, और नॉर्मल टाइमिंग्स रही. आपके पास मैनेज बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. ठीक है, आप अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं अपनी दोनों लाइफ्स को. ठीक है, वेरी फास्ट प्रमोशन अप टू सीनियर ऑडिट. ठीक है, आप कह सकते हैं यहाँ पे सीनियर AO तक आपके पास अच्छे खासे फास्ट प्रमोशन, यहाँ पे कोई ऐसी डीले का यहाँ पे नहीं देखा गया है. ठीक है, अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं यहाँ पर क्या
कॉन्स को डिस्कस कर देखिए। कॉन्स जो इन्होंने बताए, 2 बताए कॉन्स, कि आपका जो वर्क जो है ना वो रिपीटेटिव वर्क है, ठीक है। आप कह सकते हैं टाइप की मोनोटोनस आपके पास आएगा आपके पास, ठीक है। तो कह सकते हैं आप बोर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जो इतना ज़्यादा रिपीटेटिव वर्क नहीं कर सकते वो बोर होगा ऑब्वियसली, है ना। तो सैलरी यहाँ पे थोड़ी कम है, क्यों? क्योंकि 2800 ग्रेड पे है आपको, तो सैलरी कम ही रहेगी, ठीक है। आप एक्सपेक्ट तो नहीं करिए आपको 4200 ग्रेड पे के बराबर या 4600 ग्रेड पे के बराबर सैलरी मिलेगी, है ना। तो उस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो इसलिए कॉन्स में इन्होंने इसको डाला है। अब हमने इनसे पूछा कि आप अपनी प्रोफाइल को कैसे रेटिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे डिफरेंस देखिएगा प्रोफाइल की रेटिंग का, ठीक है। अगर आपने सनेजा जी की ऑडियो देखोगे तो वहाँ पे आपको अलग टाइप की रेटिंग मिलेगी। तो इसलिए हमने 2 इनपुट्स लिए और दोनों ही आपके सामने प्रेजेंट करने की यहाँ पे कोशिश करी है। देखिए इन्होंने जो स्केल दिया वो आपको 7 दिया, तो ये आपके पास कह सकते हैं संतुष्ट है अपनी जॉब से, ठीक है। आउट ऑफ 10 इन्होंने 7 रेटिंग दी है। फिर हमने इनसे पूछा कि अपनी टेस्ट सीरीज और बुक और टेस्ट सीरीज कौन सी फॉलो करी। इन्होंने बताया इंग्लिश के लिए तो मैंने फॉलो करा क्या, SP बख्शी फॉलो करी थी, और MB पब्लिकेशन की जो बुक्स आती है आपके सेट्स आते हैं ना, वो फॉलो करे इन्होंने। प्रिंट टू पैरामाउंट भी इन्होंने फॉलो करी थी, ठीक है। ये तो सिंह मैम की जो थी। मैथ्स की यहाँ पे राकेश यादव पब्लिकेशन की इन्होंने बुक लगाई थी, और सर्वेश वर्मा फॉर एडवांस मैथ इन्होंने लगाई थी, ठीक है। तो ये कुछ इनपुट्स में आप डिफरेंस देख सकते हैं। स्ट्रेटेजी वाइज भी क्या दोनों सेलेक्टेड कैंडिडेट की यहाँ पर अप्रोच रही है ना, वो चीज़ यहाँ पर। मैथ्स में अभिनय शर्मा यहाँ पर भी आ चुके हैं, इनको भी इन्होंने यूज किया था मैथ्स के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर अपनी क्वेरीज का यहाँ पर हम पोर्शन देखते हैं, ठीक है। क्वेरीज हमने पूछा इनसे आपका प्रोसेस आफ्टर द फाइनल रिजल्ट, SSC के फाइनल रिजल्ट एलोकेशन के बाद आपको मिनिस्ट्री एलोकेट हो जाती है, उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। ये चीज़ आपके पास सनेजा जी की ऑडियो में भी आपने सुनी होंगी, बट यहाँ पे थोड़ा अगर आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, थोड़ा अलग अलग इनपुट्स जो आप देख पाएंगे, तो आपको वेरिएशन थोड़ा यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने इनपुट जो है ये दूसरे कैंडिडेट हमारे पास, पोस्ट यहाँ पर सेम ही है, ठीक है। तो आप थोड़ा रिलेट करके चलिएगा जो आपने संदीप सनेजा सर की जो आपके पास ऑडियो सुनी है। देखिए हमने पूछा कितने टाइम बाद आपके पास कांटेक्ट करता है डिपार्टमेंट कैंडिडेट को, तो बोला 3 to 4 मंथ्स, है ना। अब देखिए यहाँ पे सेकंड हमने पूछा यहाँ पे कैसे डिपार्टमेंट कैसे कांटेक्ट करता है, इन्होंने बोला ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करता है, पोस्ट के थ्रू भी कांटेक्ट करता है, एड्रेस गिवन ड्यूरिंग द DVN SSC, वहां पर आपसे संपर्क किया जाता है चिट्ठी के द्वारा, जो आपने SSC में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे एड्रेस दिया होगा। कौन कौन से फॉर्म से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते थे, इन्होंने ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर शोन ड्यूरिंग DV इन SSC मेडिकल सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो आप दिखा सकते हैं, जो आपने SSC को भी दिखाई थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो चीज़ें, और मेडिकल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना होता है। हमने इनसे पूछा कि मेडिकल प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा हम प्रकाश डालिए और कुछ पॉइंट्स बताइए उससे रिलेटेड, तो इन्होंने अच्छे से बताया। यहाँ पर देखिए इनका जो मेडिकल हुआ था, मेडिकल इन दिल्ली इज डन एट RML हॉस्पिटल, ठीक है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जो है हमारे पास। नॉर्मल चेकअप होता है इज डन, इफ देयर इज एनी स्पेशल केस देन दे रेफर टू द स्पेशलिस्ट, ठीक है। कोई स्पेशल केस होगा आपके स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाएगा फॉर क्लियरेंस, ठीक है, उनके भी साइन चाहिए होंगे। फिर इट इज वेरी रेयर दैट समवन इज रिजेक्टेड ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, ठीक है। हमने पूछा था कोई रिजेक्ट हो जाता है आपके पास मेडिकल ग्राउंड से, बहुत ही रेयर है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने फिफ्थ जो पूछा है थ्रो सम लाइट ऑन द पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस नंबर दिल्ली में जो आपके पुलिस वेरिफिकेशन हुई थी वो ऑनलाइन ही हुई थी आपकी, ठीक है। तो ये थोड़ा आप समझ सकते हैं, दोनों कैंडिडेट के ऑडियो इनपुट्स को आप देख सकते हैं, ठीक है। उस हिसाब से इसको थोड़ा रिलेट करके देखिएगा इसको। डू दे आस्क फॉर जॉब लोकेशन प्रेफरेंस, यहाँ पे देखिए हाउ डज द कैटेगरी एंड प्रेफरेंस डिटरमाइन, तो यस लोकेशन प्रेफरेंस इज आस्क्ड, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 7th पॉइंट हमने टाइम कितना लेता है आपके पास ट्रेनिंग फेज में जाने के, तो ट्रेनिंग इज आफ्टर ज्वाइनिंग द ऑफिस, ठीक है। आप जैसे ज्वाइन करते हैं ऑफिस के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। इट वेरीज फ्रॉम ऑफिस टू ऑफिस, ये ऑफिस से वेरी करती है चीज ट्रेनिंग की। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने बोला कि ट्राई टू गेट अ मेडिकल ऑन टाइम, ठीक है। मेडिकल आप टाइम से कर लीजिएगा, स्पेशली इन दिल्ली दे टेक मच टाइम, ज़्यादा टाइम लेते हैं आपके पास राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, ठीक है। तो आप मेडिकल जल्दी अपने ऑन टाइम करवा लीजिए, डिले मत कीजिएगा उस चीज़ को। हमारा जो सेकंड हमने पूछा था ट्रेनिंग फेज से रिलेटेड, ड्यूरेशन क्या रहती है आपकी ट्रेनिंग की, यहाँ पे हमने पूछा, इन्होंने बताया इंडक्शन ट्रेनिंग वाज इन बिटवीन जॉब फॉर 1 वीक, ठीक है। जब आप जॉब कर रहे हैं उसी के बीच में आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग हो जाएगी, और वो होगी आपकी 1 वीक की, ठीक है। व्हाट आर द लोकेशन फॉर द ट्रेनिंग की लोकेशन क्या करेंगे, इन्होंने बोला सेम ऑफिस और ट्रेनिंग सेंटर, जैसे आपके ऑफिस में भी ट्रेनिंग हो सकती है, आपके पास ट्रेनिंग सेंटर में भी हो सकती है ट्रेनिंग, ठीक है। फिर हमने पूछा कि कोई मॉड्यूल्स या असाइनमेंट आपके ट्रेनिंग के टाइम पे जो होता है उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, तो उन्होंने बोला नॉर्मल इन्फॉर्मेशन बताई गई थी CAG के बारे में, ओवरव्यू रूल्स के बारे में, सर्विस और कंडीशंस के बारे में, ठीक है। फोर्थ जो हमने पूछा इज देयर एनी एग्जाम इन ट्रेनिंग फेज, कोई एग्जाम होता है ट्रेनिंग फेज में, कुछ ऐसी फ्यूचर रेलिवेंस है आपके पास, तो उन्होंने बोला नो, ऐसा कोई एग्जाम तो नहीं होता, बट देयर असाइनमेंट्स, ठीक है। आपको असाइनमेंट जो कंप्लीट करने होते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे। फिर अकोमोडेशन और फूड के बारे में हमने पूछा, बाय द डिपार्टमेंट देते हैं कि नहीं, क्या अपनी तरफ से अरेंज कर सकते हैं कि नहीं, कि मैंडेटरी है उसको लेना ही जरूरी जो डिपार्टमेंट देगा, तो उन्होंने बोला नहीं, ठीक है। आपके पास जो फूड और अकोमोडेशन डिपार्टमेंट प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि आपके पास ऑफिस के टाइम पे ट्रेनिंग हो रही है, तो उस टाइम क्या फूड और अकोमोडेशन दिया जाए, है ना।
व्हाट आर द चार्जेस डिपार्टमेंट टेक फॉर फूड अकोमोडेशन, ठीक है, ये एप्लीकेबल ही नहीं हुआ। जब आपके पास कोई ऐसा कोई आपकी एकेडमी भी तो रह नहीं रहे ना आपके पास, जैसे इंस्पेक्टर में आप नेसिन में रहते हैं, आपके पास प्रिवेंटिव ऑफिसर में या एक्साइज में, वो चीज़ तो यहाँ पर है नहीं, तो ये एप्लीकेबल पॉइंट नहीं है। क्या वो चार्ज क्या करेंगे, है ना, तो ये चीज़ों को इन्होंने। व्हाट इज द सैलरी अलाउंस और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के टाइम पे आपको सैलरी कैसे दी जाती है, आचार्य मिलता है कि नहीं मिलता, तो वो सेम एज ऑन ड्यूटी, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग की आपकी ड्यूटी भी हो रही है ना, 1 वीक की हो रही है, तो उसमें अलग से ऐसा कुछ है नहीं कि आपका कुछ फर्क पड़ेगा आपके अलाउंसेस। अदर पॉइंट्स इन्होंने नील छोड़ा, तो हमने भी बिल्कुल नील छोड़ी यहाँ पर, ठीक है। पोस्टिंग ट्रांसफर डेपुटेशन के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए टाइम टेकन टू गेट पोस्टेड आफ्टर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग फेज के बाद आपको कितना टाइम लगेगा। देखिए ट्रेनिंग कमेंसेस आफ्टर द ज्वाइनिंग, तो यहाँ पर टाइम की तो कोई बात ही नहीं है ना आपकी, जब आप ज्वाइन कर रहे हैं उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, तो पहले आप ज्वाइन कर रहे हैं फिर ट्रेनिंग हो रही है, तो ये क्वेश्चन का कोई आपके पास रेलिवेंस रह नहीं गया इस क्वेरी का। ये कोई ऑल इंडिया पोस्टिंग है, हमने पूछा कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फिर, ठीक है, तो बोला यस ऑल इंडिया पोस्टिंग है, ठीक है। चांसेस ऑफ पोस्टिंग इन होम स्टेट की पोस्टिंग के क्या चांसेस है, बोला आपकी रैंक पे डिपेंड करता है ये चीज, और अगर वैकेंसी उस रीजन में है, ठीक है, तो यही चीज आपने सनीजा सर ने बताई, अगर आप ध्यान से सुनेंगे इस चीज को, ठीक है। ट्रांसफर आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स एज पर द एलिजिबिलिटी एंड इन रियलिटी हाउ मेनी ईयर्स विल टेक फॉर ट्रांसफर, ठीक है, रफ आइडिया हमने पूछा था, इन्होंने बोला था कि ट्रांसफर, सनीजा सर ने भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था इस चीज को, ट्रांसफर, ठीक है। म्यूचुअल ट्रांसफर इज देयर, ठीक है, ऐसे कोई आपके पास जरूरी नहीं है कि वो ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। म्यूचुअल ट्रांसफर, अब आपसी सहमति से अगर ट्रांसफर करना चाहते तो आप कर सकते हैं। आफ्टर ट्रांसफर क्या हम सीनियरिटी लूज करते हैं, इन्होंने बोला नहीं करते हैं, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। डेपुटेशन क्राइटेरिया हमने पूछा, इन्होंने बोला कि आपके पास अलाउड आफ्टर द प्रोबेशन, जब प्रोबेशन पीरियड का ओवर होता है उसके बाद आपको ये चीज अलाउ की जाती है। देखिए व्हाट अबाउट सैलरी और सीनियरिटी आफ्टर डेपुटेशन, ठीक है, अब इसका तो कोई मतलब यहाँ पे रह नहीं जाएगा। फिर भी अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड देखें तो आपके बिल्कुल CSS से, आपके AS और CSS की वीडियो जो है हमारे पास, उसको जरूर दीजिएगा, देखिएगा, ठीक है, सेम वही होता है आपके पास जो सैलरी और सीनियरिटी का होता है डेपुटेशन के बाद में, ठीक है। इसमें स्पेसिफिकली कोई पॉइंट मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब देखिए, अब अदर पॉइंट्स इन्होंने कुछ नहीं बताया तो हमने भी खाली छोड़ दिया। वर्क प्रोफाइल एंड कल्चर के बारे में हम देखेंगे, तो हमने पूछा नंबर ऑफ वर्किंग डेज, कितने दिन में काम करना पड़ता है एक हफ्ते में, इन्होंने बताया 5 days इन अ वीक। ऑफिस के टाइमिंग्स क्या करेंगे, कोई ओवर टाइम होता है, हमने पूछा यूजुअली जो टाइम होता है 9 AM to 5:30 PM होता है। बायोमेट्रिक आपके में नेसेसरी होता है, इन्होंने बोला यस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 4th पॉइंट है ना, हमने पूछा कि जॉब कैसी है, फील्ड जॉब है, डेस्क जॉब है, थोड़ा उसके बारे में बताए, तो इन्होंने बताया बोथ, इन्होंने ये चीज़ तो आंसर दी थी, बट इन्होंने इसकी डिटेलिंग नहीं बताई। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो जो आपके संदीप सनीजा हमारे कैंडिडेट नंबर 1 है, उन्होंने सिलेक्टेड कैंडिडेट नंबर 1, उन्होंने अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि कब कब आपके डेस्क जॉब होती है, कब कब आपकी फील्ड जॉब होती है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों इनपुट्स को इस वीडियो में लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन उस एंड से नहीं मिली, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें इस एंड से मिल गई, ठीक है, तो वो चीज़ को आप दोनों को इनपुट्स को क्लब करके आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। एनी ड्रेस कोड, कोई ड्रेस कोड है यहाँ पर हमारे पास, तो हमें बोला इज एनी पब्लिक डीलिंग, तो हमें बोला कोई ड्रेस कोड नहीं है, ठीक है। 6th क्वेरी हमने पूछा ऑफिस का कल्चर कैसे, एम्बियंस कैसे, तो पॉजिटिव एटीट्यूड है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी गुड, एवरेज और बैड, इन्होंने बोला एवरेज है आपके पास, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने खाली छोड़ दिया, तो हमने भी खाली छोड़ दिया, ठीक है। सैलरी अलाउंस के बारे में हमने पूछा था, हमने ये पूरा आपके पास नहीं याद है, हम हर पोस्ट के बारे में अपनी तरफ से एक सैलरी का कैलकुलेशन करके देते हैं, जैसे बेसिक पहले 1 + DA आपका ऐड होता है ना, तो उस हिसाब से जो इस पोस्ट के लिए सैलरी निकल कर आई, पे लेवल 5 है हमारे पास 2800, 29,200 आपकी क्या बेसिक होती है इसकी, तो टोटल जो होती है आपकी ग्रॉस सैलरी 45,384 रुपीज होती है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि यही एग्जैक्टली यही होता है, और एक्स्ट्रा अलाउंसेस कोई दे नहीं जाते, ठीक है। देखिए यहाँ पर अलाउंसेस एडेड पर मंथ, इन्होंने ऊपर बोला नहीं कोई नहीं दिया था, तो स्पेशल अलाउंसेस की ये पूरी जो आपके पास क्वेरी है इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब देखिए प्रमोशन एस्पेक्ट को डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के बारे में हमने पूछा सीनियरिटी कैसे कंसीडर की जाती है। देखिए 7 क्राइटेरियाज होते हैं आपके पास, ठीक है, या इनके कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। तो नंबर सिर्फ जो ज्वाइनिंग डेट होगी आपकी, वहाँ से आपकी सीनियरिटी काउंट होगी, उसके हिसाब से कब आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेडिकल जरूर टाइम पे बनवा लीजिएगा, क्योंकि आपका मेडिकल में अभी कई बार मेडिकल लेट हो जाएगा, ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है, ठीक है, तो मेडिकल ऑन टाइम बनवाइएगा। हमने पूछा फॉर विच डिपार्टमेंटल एग्जाम्स आर हेल्ड, ठीक है, डिपार्टमेंटल एग्जाम किस कब होते हैं और हाउ मेनी अटेम्प्ट्स उस चीज के लिए दिए जाते हैं, कब कब होते हैं और कितने अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं। तो उन्होंने बोला ऑडिटर के लिए देयर इज डिपार्टमेंट एग्जाम आफ्टर 2 years, 6 अटेम्प्ट्स, आपको 6 अटेम्प्ट्स वो को क्लियर करना होता है, ठीक है। प्रमोशन लेटर और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रमोशन के बारे में हमने इनसे पूछा, तो उन्होंने बता दिया कि पहले क्या था आपका ऑडिटर, ठीक है, इनिशियल आप ऑडिटर चल गए 2800 गेट पे आप ज्वाइन करेंगे, फिर आप सीनियर ऑडिटर बन जाएंगे यहाँ पर आप, ठीक है। ये सीनियर ऑडिटर बनने के बाद आपका लेवल 8 पे पहुंचेंगे आप 3 साल बाद, फिर आप बनेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर, लेवल 10 पे पहुंचेंगे आप आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years में सीनियर ऑडिटर के 5 साल बाद आप असिस्टेंट डायरेक्टर बनेंगे, ठीक है, अब लेवल 10 पे पहुंच जाएंगे, फिर आप पहुंचेंगे लेवल 11 पे डेप्यूटी डायरेक्टर में आफ्टर 15 years, ठीक है।
ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। तो ये आपके पास रफ आइडिया, आउटलाइन आइडिया आपको अपने देने की कोशिश करिए प्रमोशन कैसे होती है। ऑडिटर से लेकर आप डेप्यूटी डायरेक्टर तक यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने खाली छोड़ दिया था। क्वार्टर्स के बारे में आप देखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ क्वार्टर्स आर वी एलिजिबल फॉर। ठीक है, टाइप 3 क्वार्टर सिमिलर टू 2 और 2.5 BHK। ठीक है, जैसे आपके पास हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट नंबर 1 ने भी बताया था। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स वी कैन गेट क्वार्टर्स। ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर द ज्वाइनिंग। ठीक है, कंडीशन और लोकेलिटी ऑफ क्वार्टर, ये आउटस्कर्ट सिटी के बाहर होता है आपके पास। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से 15 किलोमीटर दूर होता है आपके क्वार्टर्स जो होते हैं। फिर हमने पूछा इनसे पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, हमने पूछा इनको इमेजिनेशन में आपके पास गैप था, जैसे आप पहले सोचते थे कि इस जॉब के बारे में। ठीक है, कोई ऐसे आपके पास डिफरेंस महसूस किया, आपने बोला नहीं। ठीक है, दूसरा हमने क्वेरी पूछा में जॉब सेटिस्फेक्शन और रीजंस के बारे में। ठीक है, ऑडिटर जॉब यहाँ पर देखेंगे आप इज क्वाइट पीसफुल एंड प्रोवाइड्स यू विद अ बैलेंस लाइफ। ठीक है, आप बिल्कुल शांति रहती है आपके पास, कोई ऐसी आपने हबड़ा दबड़ी या टेंशन वाली बात नहीं है आपके पास। ये जॉब बिल्कुल आपके पास ये सुकून देगी आपको, कहने का मतलब ये है। ठीक है, आप प्रोवाइड्स यू विद अ बैलेंस लाइफ। ठीक है, आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जो आपकी ड्यूटी है उसको आप अच्छी तरह से बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, विल यू गो फॉर एनी अदर पोस्ट इन नेक्स्ट CGL एग्जाम। ठीक है, आई ऑप्टेड फॉर CSS नेक्स्ट CGL। ठीक है, ऑब्वियसली आप 2800 से अगर आपके पास CGL में आपके पास 4800 तक आपको ग्रेड पे की जॉब मिली तो आप ऑब्वियसली जाना चाहेंगे ना, क्योंकि ये जॉब जो आपके पास 2800 की है, तो इन्होंने क्या किया, CSS ऑप्ट किया है। ठीक है, 4600 की आपके पास ग्रेड पे के लिए। ठीक है, इनके हिसाब से टॉप 5 CGL पोस्ट हमने पूछी थी। उन्होंने बताया था ITI, MEA, CSS, AE और AAO। ठीक है, AA के आपके पास असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ठीक है, गवर्नमेंट क्वार्टर्स और रेंटेड अपार्टमेंट्स इन्होंने बोले नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, कैन वी गेट टाइम फॉर UPSC प्रिपरेशन के लिए समय मिल पाता है हमको। ठीक है, इन आंसर दे दिया, स्टार्टिंग ऑफ फ्रेश प्रिपरेशन विद जॉब स्टफ। ठीक है, अब स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करेंगे तो जॉब के साथ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। However, if you have already attempted once or twice, it is manageable। ठीक है, जब आप एक बार पढ़ लेते हैं, एक पूरे कोर्स से गो थ्रू जाते हैं UPSC के, तब आप मैनेज कर सकते हैं जॉब के साथ। ठीक है, स्टार्टिंग से करेंगे, स्क्रैच से करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बोला कोई भी नहीं है ऐसा। ठीक है, तो कुछ जहाँ पर भी आपको गैप दिखता है ना इनके इनपुट्स में, यहाँ पे इनपुट्स इनको कम दिए हैं, तो आप सनेजा जो हमारे पास कैंडिडेट है संदीप सनेजा, उनके आप ऑडियो को जरूर ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कुछ पॉइंट्स, जो पॉइंट्स आपको यहाँ नहीं मिलेंगे वो वहाँ मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है दोनों इनपुट्स को ना आप जोड़ के दिखेगा, ये नहीं कि आपने वीडियो बीच में छोड़ दी फिर आप उसके बाद आगे करके वीडियो देखना, ऐसे करेंगे तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। ठीक है, वैसे ये 2800 ग्रेड पे की जॉब होती है तो थोड़ा कैंडिडेट भी हिचकते हैं ना आपको सेलेक्ट करने वो बताने में, आपके पास कुछ इनपुट्स उनके पास नहीं होते हैं, तो इसलिए हमने 2 कैंडिडेट्स के इनपुट लिए ताकि आप अच्छे से पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, फिर भी आपकी कुछ क्वेरी इस पोस्ट के बारे में रह जाते हैं, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसके ग्रुप को और चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। दोनों इनपुट्स को जरूर और ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा, जिनकी आपको कट ऑफ से जो 20 मार्क्स ऊपर होते हैं तो उनके लिए ये पोस्ट बहुत मायने रखती है। ठीक है, 2800 ग्रेड पे, 2400 ग्रेड पे, तो उनके लिए मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप दोनों इनपुट्स को ध्यानपूर्वक सुनिएगा ताकि आप इस जो पोस्ट है इसके ऑर्डर्स जो है इनको अच्छे से फिल कर पाएँ अपनी प्रेफरेंस फॉर्म में। तो ध्यानपूर्वक आप अपना प्रेफरेंस फॉर्म में इन ऑप्शंस को अच्छी तरह से फिल कीजिएगा, तभी आपको ये जॉब मिल पाएगी। ठीक है, आपकी जॉब है बेस्ड ऑन योर इनपुट्स, जो आप चाहते हैं कि मैच कर रहे हैं जो आप चाहते हैं और ये जॉब दे रही है आपको, तो वो उस हिसाब से आप प्रेफरेंस फॉर्म फिल कीजिएगा। तो चलिए फिर मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पोस्ट इन डिटेल्स के वीडियो में। सी यू अगेन।